Don't you? Okay, ठीक है. So yes, Bunkerlan has joined now. Welcome, Bunkerlan. So we are now just almost on the last page. सूरज एक और देखना इस पे. यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने वाला ऑप्शन तुमने भी नहीं किया. कभी भी ये वाला भी ऑप्शन साथ ही में टिक कर. ये नहीं ये कि स्क्रीन शेयरिंग है जो यहाँ की विजिबल होगी तो ये वाला करना. हाँ. ठीक है. गुड आफ्टरनून बंकरलाल. Doing all good. How was your Sunday? Good. Good today. Saturday there was a class. Yes, Bunkerlam, there was a class on Saturday. It was 11 to 1, scheduled for 11 to 1. Also, there was a test also on Saturday itself. It was 10:30. Okay, there was no lecture hall that was available during that time, and that's why it was. Even for this week, possibly here onwards on Saturday, say 11 to 1. That will be a regular schedule for say Saturday. Saturday के लिए यही रहेगा हमारा. ठीक है. अच्छा. Are you going through newspaper on regular basis? Savina का तो डिस्कनेक्ट हो गया. Savina is like sir. मुझे तो पूरी फोमो वाली फीलिंग आ रही है. Feeling. Navodita was also having the same. अच्छा. So guys, have you gone through that groundwater वाली news? Groundwater report, assessment report. And as far as I do remember, it was also shared on our group also. Telegram वाला group पे share भी किए मैंने. UPSC और surrounding वाला. So groundwater. सभी ने पढ़ा है news. Groundwater news. And again today, guys, again you will find the editorial page of the Hindu. There is one article about climate finance. ठीक है, climate finance वाला article है. So go through this article. Say what this article is trying to propose for that $100 billion which was committed by the developed countries by 2020 itself. Say even now at the end of 22, they are somewhere ranging around $30 to 40 billion. And this is say for promoting a green technology, actually climate finance and adaptation also. Yes. So this is what that article editorial. Okay, go through it. You will get to know say in detail about it. And this groundwater report, you need to substantiate this kind of report while writing an answer for GS2 Indian Geography. Indian Geography में hydrosphere पे resources पे जो question होंगे, okay, where you need to substantiate your argument with the help of these reports. Ministry of Water Resources, and what this report is say, having a conclusion as that groundwater extraction in India, say, has gone down by 18%. And that is what a positive sign. Extraction से better है groundwater ultimately used.
18% reduction in the overall groundwater exploitation, and that's how it is now showing a positive impacts of various governmental water conservation schemes. Pradhan Mantri Bhujal Yojana, right, or National Aquifer Policy. You need to mention these names and examples and this kind of report, say, for further analysis, for understanding also. तो उसमें क्या करना है? Answer writing, you need to write about this various facets. So guys, go through that pocket topic, उसमें से देख लेना, okay? Or you can even go through that Hindu news. Again over here, you will find that news, ठीक है? Hindu news यहाँ पर भी है about this groundwater exploration and utilization. It is absolutely important from geography perspective, ठीक है? Optional perspective ले तो बहुत ज़्यादा है, that is important. ठीक है सभी ना, ये दो न्यूज में आपको देखना है. दिस वन आर्टिकल अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस, फर्स्ट पेज, फर्स्ट इन द सेंस एडिटोरियल के फर्स्ट पेज पे ही है, एंड देन इट इज अबाउट ग्राउंड वाटर रिपोर्ट एक्सप्लोरेशन तो नहीं बोलेंगे अब क्योंकि अब रिड्यूस्ड हो गया. चलो ठीक है, तो लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स. यस, डिफरेंट पैटर्न्स है. पहले तो न्यूक्लिएटेड और कंपैक्ट, सेमी न्यूक्लिएटेड, yes, and then dispersed pattern, and then further they are divided based on for their geometrical types like circular, semicircular, hollow rectangle, rectangular, nebular, triangular. Yes, there are various different types of this settlement as well, and we have noted enough examples. We have noted say world example as well as Indian examples, ठीक है? So we are trying to study the settlement topic integratively. India वाला भी और world वाला भी साथ ही साथ हो जाएगा हमारा, ठीक है? So now in rural geography settlement, we are left with one single point, this one. पहले तो हमने देखा है कि सेटलमेंट क्या होता है, देन उसके टाइप्स है, देन उसके डिफरेंट हायरार्कीज है, देन रूरल सेटलमेंट है, देन रूरल सेटलमेंट इट्स इवोल्यूशन, इट्स बेसिक डेफिनेशन, देन इट्स वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ओके, न्यूक्लिएटेड, कॉम्पैक्ट जो अभी डिस्कस किए, कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स, देन डिफरेंट टाइप्स फर्दर, एंड देन वी आर नाउ just about to complete this point of rural settlement. Environmental issues in rural settlements. कभी ना वो फोटो कॉपीज हो गए? यस नो हो गया ना? नहीं हुए क्यों? हाँ नहीं रहा तो इसमें स्केलिंग होती है. वैसे स्केलिंग मतलब पूरा अगर है भी ना तो स्केल डाउन करके कर सकते हैं ना उसको, पर चलो ठीक है ले लेना, ज्यादा कोई ऐसा ये भी नहीं. ये तो ऐसा करना है तो ऐसा भी ले लो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल. हाँ, तो ऑन सेटलमेंट on this particular topic you won't find much questions. Okay, environmental issues in rural settlement, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है in the examination. In fact rare question है on this topic. Still ठीक है, as it is now point of our syllabus, so we have to
study it in at least that detail. ठीक है कि that if that kind of question would be asked, you can write say at least 200 to 250 words on this particular topic. So now environmental issues in rural settlement, guys. If you do remember, we have studied that NK Singh's model. याद है? This Darzy's model of Indian morphology. फिर उसमें हमने देखा था फिजिकल मॉर्फोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूरल सेटलमेंट. ठीक है. नाउ कैन यू गेस दोस एनवायरमेंटल इश्यूज इन रूरल सेटलमेंट्स? कैन यू गेस दोस? क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं किसी भी रूरल एरियाज में से इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट? ओके, Sabina is like, sir, natural disasters. चलो ठीक है, agreed. Then climatic. ठीक है, चलो climatic changes that may lead to impact further. Maybe like say rise in temperature, heat waves, okay, or floodings, or droughts. ठीक है. Then प्रशांत, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. गुड. डिप्लीशन ऑफ, ये भी एनवायरमेंटल इशू है. ये सभी ना, देखो एनवायरमेंट से कनेक्ट करना है ना हमको. डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. गुड प्रशांत. बंकर लंग इज लाइक, सर देयर इज आल्सो डिफॉरेस्टेशन. यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक गाइस. डिफॉरेस्टेशन ये भी तो रूरल सेटलमेंट का इशू है. यस, गुड. देन make your horizon broader, because the more points you are going to write in the examination, okay, diverse as such, you will be getting more marks. जितने ज्यादा राइट करोगे उतना ज्यादा स्कोप है कि मार्क्स बनेंगे. चलो गुड. चलो ऑलमोस्ट इट हैज कवर्ड से दोस पॉइंट्स होलिस्टिकली. ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है. सो विल बी overgrazing and soil pollution. Yes, bunker lung is again having, yes, soil pollution. ये भी तो है, क्योंकि वो you will find faulty agricultural practices, right, or overgrazing that is responsible for this environmental issues as such. So this environment as a deterministic approach with clearly highlighted the need for shelter due to extremes. Now extremes in the sense, yes, it may be weather extreme, it may be survival extreme, it whatever, like say either hot conditions hai or either there are much colder conditions hai. And that's why say you will find these are the extremes of climate. These are the extremes of climate. Then settlement is, you will be getting a new dimension for settlement guys. देखो say for any particular जैनिज्म में ना एक फिलोसॉफी है स्यादवाद. जैनिज्म में ना एक फिलोसॉफी है स्यादवाद. And what it means by, you know, that for every issue or say for even for any living or non living species ना, हर किसी स्पेशीज का एक टॉपिक को देखने का अलग अलग नजरिया होता है, राइट. एक जैसे कि टॉपिक है से फ्लड. फॉर समवन फ्लड इज हाईली डिजास्टरस इन नेचर. फॉर समवन फ्लड इज लाइक से ए रिक्लेमेशन एक्टिविटी. किसी के लिए फ्लड मतलब सिर्फ ये है कि इनडिफरेंट. जो अब हम लोग हैं, हमको फ्लड से क्या कंसर्न नहीं ना कोई, कि हाँ यार चलो ठीक है वो वहां पे आ रहा है यूपी बिहार, दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न. एंड समवन मे फील लाइक फ्लड इज हाईली बेनिफिशियल फॉर सॉइल रिक्लेमेशन. देखो एक ही इशू है बट हैविंग ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग विद द सेम इशू.
Same is the case with this settlement also. अब settlement हमने क्या देखा था, like Savina you answered, like it is a space where community lives, right? But settlement for someone else maybe it is not only a space, it also include societal attributes also. कि settlement मतलब सिर्फ कोई space नहीं होती, it is also a society. But maybe for someone settlement is not only about space, settlement is not only about society, but settlement reflects or it is a adaptation by human for the limitations or the boundaries set by nature. For example देखो, we have seen whatever you may take, like say triangular pattern. दो rivers हैं, river 1, river 2. So the pattern which developed in between, ठीक है, that is what a triangular in nature. Now don't you think it is a settlement, ठीक है, settlement तो है ही है, but it is due to the boundaries itself decided by nature, that human has to accept those limitations and has to adapt those limitations also with respect to those limitations, ठीक है. So settlement is adaptation. So sadwad, that for every issue you take, living, non-living, whatever, say everyone is having different opinion about, based on his past, based on his experience, based on his relation, whatever that may be a case, you will find a difference in opinion. तो सेटलमेंट की कोई एक नई डेफिनेशन पता चली हमें, एंड गाइस यू आर सपोज टू गेट इट नोट डाउन. इट इज अ मैन्स रिस्पॉन्स टू environmental limitations, adaptation simply. Adaptation simply. Done, Bunker Lung, Rishabh, Prashant, are you done with? Yes, sure. So as like say Bunker Lung has already mentioned, sir, deforestation is yes one of the severe issues that the rural settlement is undergoing through. Okay, it is under say stress due to this overgrazing, land degradation, yes, pollution. You will find as major environmental related issues. Major environmental related issues. And other issues like say, as Savina mentioned, climate calamities, pollution, yes, groundwater pollution. That is what again, soil pollution. These are the various facets of environmental issues in rural areas. Yes, you have to add many new dimensions, guys, further into it. What? These are the agriculture related issues further.
राइट फ्यू लाइन्स अबाउट गाइज. अच्छा पहले ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है. सो इट वुड बी लाइक से quite without flow but still few more lines about it later, ठीक है. पहले ये नोट डाउन कर लेना. Untouchability, caste structure, class system, patriarchal mindset, abuse, sexual abuse, then segregations, tribal area and conflict, man-animal conflict. These are also the kind of सोशल इकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है. वैसे ये हमारे सिलेबस का पॉइंट है नहीं, दिस इज नॉट ए डायरेक्ट पॉइंट ऑफ आवर सिलेबस, but still if that kind of question, or you can use this as a problem in rural settlement, because we have studied the ruler from physical morphology aspect and social morphology aspect as well. And if you are done with last few lines, write few line about it. The size and growth of rural settlement the size and growth of rural settlement are associated with various environmental factors. The size and growth of rural settlement are associated with various environmental factors which over a period of time degraded due to increasing population, comma, high utilization of resource, above carrying capacity, high utilization of resource above carrying capacity, like for soil, water, etc. Comma, urbanization practices in rural areas
urbanization practices in rural areas, blurring, BLURRING, blurring of rural and urban difference, rural urban difference, and other factors, and other factors. Hence, next line, hence, there is need for, hence, there is need for sustainable rural practices, sustainable rural practices, keeping environmental limitations, keeping environmental limitations and human needs, and human needs in harmony, human needs in harmony. That will help to solve, next point, that will help to solve, in continuation में लिख देना but full stop देकर, that will help to solve environmental as well as social problem, the settlement is facing, ठीक है? So that is what this environmental issues in rural areas. I am repeating again, there was no such a question that was asked in examination on this topic, but I am telling you, अगर 10 marker भी आता है, अगर 15 marker भी आता है, तो now you are having enough stuff to write about this point. Okay, now with this we are done with rural settlement. नोट्स मिले सभी ना, नोट्स मिले फिजिकल नहीं मिल जाएंगे, ठीक. And our next point is, and the most important than this rural areas, ठीक है? अगर if you try to identify the weightage for rural and urban settlement, you will find rural settlement is having comparatively less weightage than that of urban settlement. ठीक है? तो इस पे it just because that urban settlement is having many questions, okay, many questions in Indian geography and also in world geography as well. ठीक है? World geography as well on urban settlement, various, like say what it means by rank size rule,
what it means by primate city, what it means by say the mega cities in the world, what are the problems of slums, what are the urban resilient cities, and the way like. Okay, so you will find many such questions on this urban settlement as a topic, and we'll be integrating it with the Indian geography so that हमारे दोनों भी टॉपिक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे. Now, so guys, can you define urban areas? Not in the term that is given by census, ठीक है? That Shubham had let us know about कि yes sir, ये criteria है. No, what you mean by urban areas? You guys also online, Bankar Lang, Prashant, Rishabh, Shubham, anyone? Where? Okay, okay. अच्छा, और सभी का अर्बन एरियाज के लिए कुछ निगेटिव बायस एटीट्यूड है? नहीं, पॉजिटिव है. अच्छा, दिल्ली के लिए क्या क्या कहना है आपको? कुछ है कहना दिल्ली के लिए? तो दिल्ली ने तो डेंगू दिया है मुझे, तो मैं मतलब क्या ही करूँगी. दिल्ली से ही हुआ ना? हाँ, बीमार तो देयर इज सही तो है, बिल्कुल सही है. So they are like more focused and concentrated in their own area of say their created zone as such, right? Maybe societal, maybe economical, maybe friend circle, whatever. They don't know other than their zone of influence or area. अच्छा ये no, that's a reality, I do agree with this. So actually you know that dustbin concept, dustbin, no, dustbin, simply dustbin concept in family. तो डस्टबिन का यूज क्या होता है? That we put a waste into it, या डस्टबिन, यही तो करते हैं ना डस्टबिन. So what in urban areas ना, this old age people are considered as dustbin, that they are worth enough. ठीक है, मतलब ये अभी इंडिया में फुल्ली ये एक्सेप्ट नहीं है और it is not even implemented to a very far extent, but yes, now in elite families or now even European societies or developed countries societies, what you will find, this old age people, okay, father, mother, parents as such, they are to be considered as worth enough to be put in dustbin. So they are to be considered as dustbin simply. कि क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे that you shall ask say कि कितने डस्टबिन है आपके घर में, समझ रहे हो? that it means कि ये नहीं पूछ रहे कि ओल्ड एज पीपल कितने डस्टबिन है आपके घर में. So that is what the case is. Yes guys, ये तो अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में तो ऐसा नहीं होता एज फार एज आई नो. वो तो बट होगा भी, क्योंकि जो वैल्यूज दिस अर्बन एंड रूरल एरियाज दे आर म्यूचुअली, they are, though no doubt it may be due to social pressure. Now the respect should come from inner self, it should come from inside, right? If it is due to a outside influence, तो वो भी problematic है. Problematic in the sense कि not in that sense, but yes. So even now in rural areas you will find elderlies are respected. They are respected, no doubt,
but still there is some kind of social pressure that lies in existence. तो हमने हमारे फैमिली में भी कभी देखा होगा ऐसे कि एल्डरलीज के साथ में कभी कभी मिस ट्रीटमेंट होता है, मिसबिहेव होता है समटाइम्स, ओके, नॉट विथ एवरीवन, बट समटाइम इट हैपेंस, मे बी, एंड it may be intentional, it may be unintentionally, whatever, due to that sense, but it happens. And now in the modern world you will find this tendency is at rise, and I have just let you know about this dustbin concept. Okay, use it as a case study. You can use it to replicate any societal behavior, to show the culture, urban culture now that is getting developed in India, whatever in that sense. Acha. Yes, online guys, you find any other say definition of urban areas? Definition the same. I'm not talking about literal definition of urban area. I'm talking about what you feel about urban areas. Yes, this is what the urban area is in terms of some analytical ways. Think for, because you will be asked in interview about it, that yes, tell me, Rishabh, what do you mean by urban areas? It's just because you are having optional as a geography, so tell me about what you mean by urban areas. Okay, bunker lung is like say having high functionality. Okay. High functionality. That means it is having diverse functional base. Primary, secondary, or tertiary. Yes, good, right, bunker lung, right, no doubt. Rishabh, mostly engaged with secondary or tertiary sector. So, okay. Characterized with high degree of population. Okay, yes. High degree of population. Yes. So, Rishabh, your point is already included in functionality wala point. Yeah, it is a big part of this functionality, secondary or tertiary sector. Yes, what you further means by urban areas? Definition तो हम देखेंगे, census town, municipal towns, but what it means by urban areas, because you need to understand that thing say from the very soul of it. चलो ठीक है. अच्छा, what kind of society you observed in urban areas? Society, there, like say for example, you find a homogeneous or heterogeneous society in urban areas. Heterogeneous, yes. Yes, exactly, bunker lung. That in rural areas, if you observe, society is more of a homogeneous nature. That is, same type of say social elements are having their occurrence. They are having some affinity as well. Yeah, they find some connect in between them. But what about urban areas? They are highly segregated. These people are highly isolated. These people are highly heterogeneous in nature. Someone may be from UP, someone may be from Haryana, someone may be from Bengal, maybe from Maharashtra, maybe from any other region. You will find they are having a destination point as Delhi. It is what a heterogeneous society. There are positive as well as negative, no doubt, iske, but yes. Right, Rishabh. Acha. What you find about further man and environment relationship in urban areas? ये भी तो कैरेक्टर है ना अर्बन एरियाज का. देखो, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू ओपन आउट डिफरेंट डिमेंशंस. यू हैव टू आंसर दिस इन दिस फैशन. अगर पूछा है ना अर्बन एरिया, व्हाट डू यू मीन अर्बन एरियाज, डोंट answer it like in a definition, sir. 5,000 plus population, 400 plus density, and secondary sector 75% male. No. Explain it from the very soul of this urban understanding. Man-environment relationship. Favored possibilism. Yes, Pankar Lang.
Like bunker lung is like say it favors her possibilism. देखो guys, possibilism क्या होता है? Are you aware about determinism now? प्रशांत, सवीना, determinism पता है? That everything is well determined. That हम कहते हैं ना, डेस्टिनाइन होता है कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ जो जो किस्मत में लिखा होता है वही होना है. ये है determinism. Now what is possibilism? Possibilism is say man controls the environment. There are no necessities, but possibilities everywhere, and man as the judge of its use can use those possibilities accordingly. That is what the statement given by Faber. He was the proponent of possibilities, also possibilism in the sense then, like, so according to Vidal de Blache, that's not a case that man is only controlled by nature, but many times in fact now, and the modern man specifically, you will find man has broken the limitations set by environment. What exactly? Aeroplane, jet flying, kya hai? Yeah, the environment you are now set in, that you are now trying to, you have connected with me also, guys. I am here in now Delhi, and you are now basically at your native place, and still you find a kind of connect with me, right? Internet or whatever that way is. So what limitation nature has put in on man कि अगर physical connect हो तो ही आप sense कर पाओगे कि that the kind of thing is. But now man has overridden that limit and invented, say for example, agriculture. तो agriculture में sometimes ऐसा होता था कि wheat is basically crop in low temperature countries, but now it is being cultivated in Andhra Pradesh, Kerala, and southern states also. And how it happens? It happens due to possibilism. That man is the judge of all possibilities, and he knows how to use it further. No doubt, environment still finds superiority, but that is what the possibilism is. Okay, so that is what the point that is given by bunker lung. But mostly favored possibilism, and what I believe that it is more of a nature of imbalance, isn't it? That man and environment relationship, they should be in harmony, they should be in synchronization. But what happened in urban areas? देखो rural areas में comparatively balance है इस चीज का. Yeah, rural areas you will find comparatively, even their festivals and cultures, they are in accordance with the determinism or nature. काल बैसाखी क्या है कि नेचर ने जो कुछ टाइम लिमिट सेट किए अकॉर्डिंगली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल, एंड देन वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग. और दिवाली, पोंगल, यस पोंगल, मकर संक्रांति, बहुत सारे फेस्टिवल्स है. होली, होली का भी तो सिग्निफिकेंस है ना, क्योंकि वहां से अब चेंज होना है, क्योंकि अब समर स्टार्ट होगा होली के बाद, तो द थिंग इज यू विल फाइंड, यू कैन से स्टार्ट दैट कोल्ड बाथिंग आल्सो, वो भी एक चीज है. तो हर किसी सीजन्स का, सॉरी, हर किसी फेस्टिवल का, हर किसी कस्टम्स का, हर किसी रिचुअल्स का, you will find some connect with environment. Now in urban areas you find that so religious significance of the festival, no. पता चले कल दिवाली थी, आज सवीना घर आ गई, आज दिल्ली फिर से आ गई, राइट? ऐसा ही था ना. तो we are now getting more urbanite in nature, and the result is we are somehow losing man environment relationship balance. तो भले ही सभी ना कितना भी कह ले कि सर अर्बन एरियाज ऐसा है वैसा है, बट आपको भी तो अर्बन एरियाज ही पसंद आ रहा है, इजंट इट? और ऑफिसर बनने के बाद भी तो अर्बन एरियाज में ये तो रहना पड़ेगा. रूरल एरियाज में तो आप जा भी नहीं पाओगे. फिर देखो अभी भी जाते हो तो कैसा लगता है, सेट हो पाते हो प्रॉपर? अभी भी अगर जब घर जाते हो, घर मतलब चलो ठीक है अब तो नहीं, पर जब भी जाओगे, मतलब दिल्ली फिर भी मेगा सिटी है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगा सिटी, और हरियाणा का कोई सिटी भी अगर हो, या इवन महाराष्ट्र में, तो दे आर लाइक स्लो मूविंग सिटीज है,
किसी को कोई चीज की रश नहीं है, 10 बजे जाना है तो धीरे 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 जाएगी। यहाँ देखो दिल्ली में पता चले हर कोई दौड़ रहा है, हर किसी का टाइम है मेट्रो का, हर किसी का टाइम है ऑफिस का। तो वहां की लाइफ स्लो है, यहाँ की लाइफ फास्ट है कंपैरेटिवली। विच वन, विच सिटीज? हाँ, देखो the thing is that the concept of development is according to many is flawed, right? I had told you about Sadhwad, right? Sadhwad. Now, that there are many opinions or views to look around any particular issue. So for someone, that development is what wearing like a blazer and suit, like to speak fluent English. But for someone, it may be a case like tribal society. Development is not that sense. Development is really in a spiritual sense. Maybe in rural areas, that may be a kind of balance. That if you are having a balance in man and environment relationship, your society and this. Maybe if you go in Bhutan, वहां पर इंडेक्स है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स. What it is? This gross happiness index, it's not about GDP only. It's about your mental satisfaction. It's also about your quality of living, your housing. It also about say your societal connect. So for everyone, concept of development is say highly different. And as we consider urban areas, you know, देखो like say for मैं तो देखता भी थोड़ा analytical भी हूँ मैं, तो what I observed guys now, अगर अर्बन एरियाज में छोड़ो ना, दिल्ली में, इवन फॉर मी ऑल्सो, सी फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट मनी एंड सम रिकॉग्निशन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट गिवन बाय यू गाइस, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ मिल नहीं रहा है सर. जो आ रहा है वो तो सब कुछ जा ही रहा है वैसे. लाइक से इट्स ड्यू टू पोल्यूशन, यू विल फाइंड at least degradation. Okay, life expectancy goes down by 5 years at least. ये सोसाइटल रिलेशनशिप जो है, पेरेंटल हो गए या और भी है, ये भी वीक हो गए, राइट? से बाय सीइंग दोस से अनरूली पीपल्स इन योर अर्बन एरियाज, मेंटल इश्यूज है यार, हो रहे हैं ना. सो एक्सेप्ट मनी एंड इफ समवन बिलीव्स इन लाइक से अदर एस्पेक्ट आल्सो, तो ये दो चीज अगर छोड़ दिए, दो या तीन चीजें, तो बाकी अर्बन एरियाज में तो आपका सब लॉस ही तो हो रहा है. गेन क्या हो रहा है? हेल्थ इनफैक्ट वो भी तो हो सकता है सब, हर किसी के लिए, जैसे कि इट्स फॉर यू, राइट? सो इट ऑलमोस्ट हैपन विद एवरीवन. So that is not a real development. We are not supposed to develop ourselves on that line. We are supposed to develop where, say, all your social, mental, physical, economical, environmental, all dimensions, they are, say, at their topmost point. That is what a development in true sense. पता चल रहा है कि अर्बन एरियाज में तो है, बट फिर भी वीमेन के लिए कुछ बायस्ड है अभी, राइट? पता चल रहा है कि अर्बन एरियाज में रह रहे, फिर भी कास्टिज्म पे बिलीव कर रहे हैं. तो ये तो अर्बनिज्म नहीं हुआ ना, ये तो ट्रू अर्बन कल्चर तो है नहीं. दैट इज नॉट ए ट्रू अर्बन development as such. So that sometimes this urban area, this development is pseudo development, and they are just trying to imitate what happened in developed countries. So Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata or other countries है, ये maybe they are having buildings of cements, but they are not having say the say sensitive hearts and mind. तो वो नहीं है, तो फिर तो incomplete है ना ये urbanization. Okay, चलो ठीक है. So I given you a different angle also to look around this urban issues, okay, or developmental issues. चलो ठीक है. So get it, note down the very first point, what it means by urban region. Now what we discussed, that was a reality, and now what we are going to write, that is what an aspirant point of perspective. ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना है, so we are not supposed to write all negative about it.
urban areas urban areas, guys, have a look, get it, note down this few lines about this first. Urban areas are the type of settlement, the type of settlement which are characterized by which are characterized by high density of population, which are characterized by high density of population, comma, dominance of dominance of value additive and other than agricultural sector, other than primary sector, sorry, other than primary sector, comma, heterogeneous in composition, comma, heterogeneous in composition, and and imbalance in resource use, imbalance in resource use and man environmental relationship, and man environmental relationship. Highlight those, all those point, guys, जो हमने characterize लिखे, high density population, homogeneous, heterogeneous वाला point, सब point highlight करना है. Those are what the key points actually, those characterize the urban settlement. You can add your own points also, ठीक है, और भी कुछ point अगर with time you will find, so you can write there also. Next slide. The urban areas in India are defined in two ways. First, census town. With criteria as census town with criteria as with criteria as 5,000 plus population, census town with 5,000 plus population, 400 plus population density, and 400 plus and 75% of male population should be in other than primary activity, and 75% of the male population should be in other than primary activities.
And second category is municipal town. Municipal town. First category is census town, and second category is municipal town. These are those urban areas. These are those urban areas having establishment of any urban governance, establishment of any urban governance as municipal corporation, as municipal corporation, comma, municipal panchayat, comma, cantonment board, comma, cantonment board, port trust, comma, special purpose agency, or any notified area. Any notified area. Okay, these are what the urban areas in India, definition of urban areas in India. अब एक just in few lines see the history of world urbanization, and then we'll be shifting on this categorization. ठीक है, city, towns, urban areas, mega city, metropolis, conurbation, all those. So guys, what is the history of urbanization? Just have a few lines about it. The earliest city to rise in the region of Mesopotamia. The earliest city to rise in the region of Mesopotamia is considered by is the earliest city to rise in the region of Mesopotamia is considered by modern day scholars to be Uruk. Around 4000
4500 BC, around 4500 BC, and then that of Ur, U-R, and then that of Ur, around 3800 BCE, around 3800 BCE. Both of which were situated on the banks of Euphrates River, Euphrates, sometimes it is pronounced as, so that is what Euphrates River also. And if you do remember, Prashant, we have already completed that task, right? Those rivers and civilization. बाकी लोग तो थे नहीं, Shubham and Prashant were present during that time, and Bunkerlang, yes, in your batch also I think the task was given. Rishabh, Bunkerlang. So this Euphrates River, Mesopotamian civilization, you will find that is developed somehow during that time. The structure of the city, the serenity of living, attracted the nearby population to come and settled in the region, in the city, to come and get settled in the city. In case of India, next pointer, ठीक है? In case of India, the first well planned and structured urban settlement came into being during the Indus Valley civilization, which is sometimes also referred as urban culture civilization. उसका exactly ऐसा ही nomenclature नहीं है, but sometimes it is like say urban culture. It is more of a urban culture.
rectangular pattern, tall buildings, uh, citadels and down valley region, then baked bricks है, right? Baths है, drainage system as you mentioned, right? So, grade bath system. So all these are what say the indication that Indus Valley civilization is having say the developed urban culture as such, and there are many cities in fact जहां पर लोथल, यस, स्टोरेज सिस्टम लोथल पे है, जैसे कि अभी हुआ राखी गढ़ी, तो बहुत एडवांस सिस्टम थी वो उस सेंस में ड्यूरिंग दैट टाइम अर्बन सिविलाइजेशन. लेटर, नेक्स्ट पॉइंट, लेटर during Mauryas and Mahajanpadas guys, we are noting the history of urbanization. ठीक है, वर्ल्ड भी लिख लिया हमने in general, and then we are focusing more on India. Then Mahajanpadas, where new cities as a focal point emerged. Where new cities as a focal point emerged. During Gupta's time, urbanization phase was at its peak. Urbanization age was at its peak. ब्रैकेट में लिखना golden period of Indian history. Gupta's time is known as golden age of Indian history. Bracket close. Which started to decline later. With decline of the empire. During medieval times, Sultanate ruling established new Turco-Indian, TURKO, क्योंकि टर्किश थे ना ये लोग. कुतुबुद्दीन ऐबक, he was a Turkish slave. So Turco-Indian cities were developed. Like Tughlaqabad. और औरंगाबाद, महाराष्ट्र, और बिदर, किन्होंने, ग्रैंड ट्रंक रोड था वो, यही था ना, रोड की बात कर रहे हो ना, ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, वो शेरशाह सूरी ने बनाया था. क्या था? मोहम्मद बिन खिलजी नहीं था वो,
अलाउद्दीन खिलजी था वो, क्या किया? किस सेंस में? अर्बन डेवलपमेंट क्या? जहां तक मुझे पता है उसने डेवलपमेंट का मतलब उसने गवर्नेंस का किया था। सिटीज कौन से बना है मुझे नहीं पता। होगा शेरशाह सूरी वो। हाँ ट्रेड मतलब उसने क्या किया, दिल्ली से लेके पटना तक रोड बनाई उसने, ग्रैंड ट्रंक रोड दैट इज टू बी नोन। अब जो हमारा नेशनल हाईवे 1 जो है ना, 1 और 2 ये दोनों का मिला के वो अमृतसर से लेके पटना तक, तो ये नेशनल हाईवे हमारा 1 है। सो बचा है ना टाइम? हाँ। सो ये था वो। अब बहुत सारे सिटी बने हैं वैसे, जैसे कि फिर लेटर, नेक्स्ट लाइन लिखना, तुगलकाबाद लिख दिया, औरंगाबाद लिख दिया, और भी कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स है विथ यू। देन लेटर ड्यूरिंग मुगल पीरियड, लेटर ड्यूरिंग मुगल पीरियड based on Mughal architecture, based on Mughal architecture, new cities like Agra, Fatehpur Sikri, Agra, Fatehpur Sikri, एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत है, शाहजहानाबाद है दिल्ली में ही। ओके, वेर एस्टैब्लिश्ड, वेर एस्टैब्लिश्ड। ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर किसने? ब्रिटिश एम्पायर ने। वो तो फिर उनका पर्पस ही था ना, उनका पर्पस एक्सप्लॉयटेशन था। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन के जो जो मीन्स हो सकते थे वो सब मीन्स उन्होंने बनाए। रेलवे, मॉडर्न ये अर्बन सिटीज, उसके बाद हाँ यस, उसके बाद एजुकेशन, क्लोथिंग पैटर्न, एजुकेशन, ये सब उन्होंने क्या एक्सप्लॉयटेशन की मीन बनाए, कि जिससे जो भी रेलवे उन्होंने आपके लिए थोड़ी ना बनाई, रेलवे हाँ कम और उनके गुड्स पे यस। तो ये वाली वो सब चीज थी, क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज ऐसी ही होती है, एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। अब ब्रिटिश का आर्गुमेंट ये है कि हम कम एक्सप्लॉयटेटिव थे। अगर आप देखोगे फ्रेंच की कॉलोनीज या डच की कॉलोनीज, तो उनमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था। हमारे कॉलोनीज में फिर भी हम ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट करते थे। So they are having this kind of argument, though that it absolutely falls incorrect, क्योंकि exploitation तो exploitation ही है ना। देखो वर्ल्ड में और फ्रेंच कॉलोनीज भी तो है, अफ्रीका में, इंडोनेशिया इस साइड में, या डच की कॉलोनीज है। इंडोनेशिया तो डच में था पहले, डच के कंट्रोल में। तो इस कॉलोनीज में अगर एक्सप्लॉयटेशन देखोगे और इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन देखोगे या ब्रिटिश कॉलोनी में एक्सप्लॉयटेशन देखोगे, तो कंपैरेटिवली लेस है, ऐसा उनका आर्गुमेंट है। बट एक्सप्लॉयटेशन तो एक्सप्लॉयटेशन ही होता है ना अल्टीमेटली, तो वो तो है। तो एक्सप्लॉयटेशन या तो उनका मतलब जो कंट्रोल था वो इस हद तक था ब्रिटिश का, कि वर्ल्ड कप 2020 में जब इंडिया ब्रिटेन से हार गया तो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे, राइट? इंडिया जब हार गया सेमीफाइनल में तो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे, और जब पाकिस्तान फाइनल में हार गया तो इंडियंस खुश हो रहे। तो देखो अल्टीमेटली जीत किसकी हुई है? ब्रिटेन की हुई। और इंडिया और पाकिस्तान बनाया भी किसने? तो यहां तक के हमारे माइंड पे कंट्रोल है। खैर वो तो गेम्स अपार्ट, बट द थिंग इज कि इस लेवल पे उन्होंने डीप किया है कि आज भी अगर कोई धोती कुर्ता में देखे, दैट मींस कि ही इज अनसिविलाइज्ड ऑन दैट लाइन। कभी कभी ऐसा हम देखते हैं। और जेंटलमैन कोई अगर होगा तो सूट बूट में होगा तो ही जेंटलमैन है, अदरवाइज कोई नॉर्मल जो वेयर कर रहा है वो बंदा जेंटलमैन नहीं हो सकता।
ऐसा वाला कल्चर बनाया है। एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया favoring the colonial policies, created new urban centers, those will serve as administrative cities, comma market cities, administrative cities, market cities. British Baghdad from consensus. Okay. Market cities, comma defense cities like Patiala, Lahore. ब्रैकेट में लिख भी लेना एग्जाम्पल, एक्चुअली मार्केट सिटीज में लिख लेना एग्जाम्पल मुंबई, मार्केट सिटी मुंबई उसी में लिख लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज में दिल्ली है, यस एडमिनिस्ट्रेटिव दिल्ली, कोलकाता। कोलकाता पहले था ही नहीं ना कभी। ब्रिटिश वर द फर्स्ट टू merge those three cities in that region, and then Kolkata was ultimately established. First सुप्रीम कोर्ट 1774 एक्ट, मेरा भी हिस्ट्री कुछ अच्छा है। हाँ वही 1773 इम्प्लीमेंट हुआ ना, वो बना तब ना वो। हाँ एक्ट तो परमिशन तभी आई थी, वॉरेन हेस्टिंग वाले एक्ट्स। यस ऋषभ इज हैविंग वन पॉइंट, क्या है? ब्रिटिश laughed from corner. Yes ऋषभ एग्जैक्टली, why they are laughing from the corner? वो तो फ्रंट हेड पे आके हंसेंगे हम पे, 200-300 सालों से तो यही तो कर रहे हो, तो क्या है, चाहे इंडिया जीतो चाहे पाकिस्तान जीतो, अल्टीमेटली तो ब्रिटेन ही जीत रहा है। एंड न्यू मॉडर्न सिटीज है फिर नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट इनफैक्ट इन दिस, न्यू मॉडर्न सिटीज are developed after independence, like Chandigarh, like Noida, Noida, and industrial towns, Jamshedpur, बिहार, बोकारो, yes, you can write many example over here, बहुत सारे हैं अभी हमारे। Zaria is the largest coal mine in India, झारखंड। रानीगंज बंगाल लार्जेस्ट है, हाँ कोल माइन है, सिटी भी बनाई है, यस। फैक्ट क्वीन लाइक, ठीक है। नाउ गाइस ड्रॉ दिस डायग्राम, sorry this hierarchical presentation of urban areas, right? These terms are very much important, say from the perspective of urban settlement point topic.
isolated dwellings, hamlet, village, small town, large town, city, conurbation. Isolated dwellings, hamlet, village, small town, large town, city, conurbation. Done. Okay, चलो. So guys, देखो अब next वाला point है settlements and its size. ठीक है. Now, the very first thing. Don't get it note down. I'll be giving you the dictation first. Isolated dwellings. Now itself from the name, isolated है मतलब ये क्या है? Kind of scattered type of settlement है that we have seen in the rural areas. Scattered देखा था हमने, dispersed. हाँ, yes. तो जहां पर ना बहुत segregated dwellings है. These are isolated dwellings. So you will find they are on the boundary zone of urban and rural areas. कि जैसे अब दिल्ली से दिल्ली के रूरल एरियाज में जाओगे ना, सिटी से तो रूरल एरियाज में, तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ आइसोलेटेड ड्वेलिंग्स. पहले जब मैं मतलब बचपन में कभी जाया करता था ऐसे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, तो मैं सोचता था यार इस लोग में घर लोग रहते कैसे हैं इस घर में, क्योंकि कुछ भी अगर हो तो कुछ सामान भी लाना हो तो पता चले 10 किलोमीटर जाना है, तो हाउ दे कैन मैनेज. सो दैट इज व्हाट say their own issue, but still the thing is that kind of settlement is isolated dwellings and it is usually at the outer margin of urban areas. Second, hamlets, we already discussed this, right? It is what a tiny population settlement, 100. Then village, these are the part of rural settlement. Rural settlement. And now this village, then now is transitioning into a urban areas. Okay, it is for sure the one region which is now having more attractional points, maybe in terms of resources, maybe in terms of energy, maybe in terms of whatever that point may be. Industrial हो सकता है, tourism center हो सकता है, किसी भी सेंस में जहां पर क्या होगा, slowly and steadily you will find its population is at rise. तो अब उसकी साइज तो इंक्रीज होनी है, हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड बढ़ना ही उस सिटी का. एंड नाउ दिस विलेज इज देन ट्रांसफॉर्म इनटू ए टाउन. नाउ टाउन इज नॉट एग्जैक्टली ए सिटी इवन एज ऑफ नाउ. दैट टाउन इज इवन ए मॉडरेट सिटी इन ए रियल सेंस. जिस हाँ सेमी अर्बन रीजन, यस, सेमी अर्बन रीजन where the dwelling is not exactly of urban characteristics, it still reflect a rural behavior. Like say देखो हमारे रीजन में ना तालुका प्लेसेस होते हैं, कुछ तालुका प्लेस. यहाँ पे क्या कहते हैं हरियाणा में, तालुका पता है, तालुका ही होता है ना, तहसील. हाँ यस, तहसील वाला रीजन. ओके, सो ब्लॉक सिंपली तहसील और ब्लॉक. So you will find this
as a block region where dwelling is still of a rural characteristics. ठीक है, हाँ, but for sure it is more than that of urban village region. Now this large town, it is now heading towards a city region. That city which is having population up to say 3 lakh even, okay, 1 to 3 lakh, you will find it is having a city population, and the city population you will find it is at rise further. इसकी growth जो है वो ज़्यादा हो रही है, and more accelerated growth also. Now city further transform into large city up to 10 million population. Okay, that is all defined based on population. It just because कि population आएंगे तो अपने आप एरिया बढ़ेगा, अपने आप dwellings बढ़ेगी और अपने आप उसकी characteristics change होंगे. Then large city to metropolis, you will find up to 3 million population. 3 million population, a city and surrounding towns that are in close proximity and have started to merge into each other. जैसे देखो नहीं, गुड़गांव दिल्ली तो हाँ ये अभी के फेज में ना इतना नहीं होगा. ये था कब, दिल्ली जब 1950-60s में था. तब क्या हो रहा है देखो दिल्ली है ये, ओके, एंड देयर आर सराउंडिंग सिटीज लाइक से ओवर हियर, राइट. जबकि वो हो सकता है नोएडा वाला रीजन होगा या गुड़गांव वाला रीजन होगा या दिस रीजन, ठीक है. दोज आर इन पेरिफेरल पार्ट. नाउ स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट दिस सिटी इज आल्सो ग्रोइंग, maybe due to attractional point or magnet center acted as Delhi, ठीक. और दिल्ली भी साथ में साथ क्या हो रहा है, इसे increase in its expand. What happened? Say the clear cut boundary between Delhi and surrounding or satellite town is now getting blurred. वो weak होते जा रही है boundary, and it then later this all became a part of this city itself. जैसे कि मुंबई. अब मुंबई के केस में लोग, व्हाई आई एम गिविंग यू एग्जांपल गाइस, यू डू रिमेंबर, क्योंकि ना ये एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में राइट करने होंगे, क्योंकि किसी भी कंसेप्ट का आपकी अंडरस्टैंडिंग कब रिफ्लेक्ट होती है, व्हेन यू एबल टू पुट डाउन और से कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ एन एग्जांपल्स. सो मुंबई, फॉर एग्जांपल, नाउ मुंबई इट वाज हैविंग पेरिफेरल टाउन्स एज कल्याण, इट वाज हैविंग पेरिफेरल टाउन्स एज लाइक ठाणे, ठीक है, दो इट इज नाउ सेपरेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट एज वेल, ठीक है, एंड देयर आर मेनी एसेट्स, ठीक है, अंधेरी वाला का रीजन. व्हाट हैपेंड नाउ, स्लोली एंड स्टेडीली मुंबई हैज स्टार्टेड टू टेक दिस रीजन्स इनटू इट्स कवर, एंड अल्टीमेटली दे आर नाउ बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस रीजन. So based on its expand now this cities, this categorization develops. अब अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो इट इज नाउ मेगालोपोलिस, मेगा सिटीज, ठीक है, समथिंग मेगा सिटीज. इफ पॉपुलेशन इज इन दिस रेंज 3 to 10 million, इट इज लाइक ए कन्वर्बेशन, कि जिसमें आपको दिल्ली में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क समवन हु लिव्स इन फरीदाबाद इवन, ठीक है, तो उसको पूछोगे ना कहाँ रहता है, वो कहेगा दिल्ली में रहता हूँ. दो फरीदाबाद एंड दिल्ली हार्ड 1 hour और 1.5 hour वाला टाइम है, बट स्टिल ही इज लाइक मैं दिल्ली में रहता हूँ. और गुड़गांव, राइट, गुड़गांव वाला रीजन है, या नॉर्थ दिल्ली साउथ दिल्ली वाला जो पेरिफेरल सैटेलाइट टाउन वाला रीजन है, दे आर नॉट इन रियल सेंस द पार्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बट दिस गाइस दे फील लाइक दे आर द पार्ट ऑफ द अर्बन एरिया इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट दिस मेगालोपोलिस, कन्वर्बेशन and metropolis region. ठीक है guys, so these are what a large centers, these are like a what simple urban regions, small or medium size simple urban region. These are like transitional zones, and these are still rural settlements. ठीक है, clear guys? Rishabh, Prashant, Bankarlang. Now you will be encountering with these terms again and again. Okay, so you should be much clear about these concepts. All this, ठीक है? You will be having those
Dictation also for this matter, क्योंकि important है. Question, it was not asked directly on this, but primate city and those, it was already asked. The number of services, now write in this, और फैन स्टार्ट कर देना. ये चल रहा है, चलो ठीक है. The number of services that a settlement provides, the number of services that a settlement provides, इधर आना कपिल, increases with settlement size. ये क्या, मेरा थोड़ा एडजस्ट करना जरा, हमें दिखो ऐसा, और हाँ बस ठीक है. Yes, increases with the number of services that a settlement provide increases with settlement size. Next point, small settlements will provide low order services, such as doctors or hospitals, primary hospitals, low order services like primary and secondary hospitals, comma, some manufacturing equipments, comma, post offices, etc. While large towns, comma, cities and conurbations will provide normally high order services, as tertiary hospitals, supermarket chains, airports, etc. Next point, large settlements and conurbations
and conurbations have a much larger sphere of influence. Have a थैंक यू यार, ये फैन वाला देखना एक बार, इसकी स्पीड बढ़ाना. Have a much larger sphere of influence than smaller one. Than smaller one. Than smaller one. This means smaller ones. कम रखना, कुछ कम करना उसके, एक से कम करो. This means they attract people from a wider area. This means they attract people from a wider area by enhancing pull factors. By enhancing pull factors. याद है पुल एंड पुश फैक्टर्स? सभी ना, कहा देखा था हमने ये? गुड. माइग्रेशन लीज प्रिंसिपल. यस, पुश एंड पुल फैक्टर्स है उसमें. तो अर्बन एरियाज में पुल फैक्टर होता है, रूरल एरियाज में पुश फैक्टर्स होता है जनरली इन ऑपरेशन. For example, New York is having New York and why? New York is having a global area of influence, global, that it can attract people from all or across the globe. While Mirzapur will attract people from its surrounding only. People from its surroundings only. People from its surroundings only. Okay. चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला है टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट. ठीक है, सेटलमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज. अर्बन सेटलमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज, यही वाली हेडिंग रखना. अर्बन सेटलमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज. ठीक है ना गाइस. फर्स्ट, टाउन्स. Towns are the urban settlement. Towns are the urban settlement with
urban settlement with population ranging between 5,000 to 1 lakh. 5,000 to 1 lakh. It usually represents urban settlement with dominance of rural behavior and characteristics. Urban settlement with dominance of rural behavior and characteristics. It would have, or it is having, it has, ऐसे लिखना, it has senior schools, hospitals, and shops, shop centers providing services. After town, next is city. Urban areas having population between 1 lakh to 1 million. Population between 1 lakh to 1 million, and having advanced urban characteristics. They are having incremental urban services, but not as that of large city. Next, metropolis. Guys, write these top three. And I will be giving you example for metropolis, conurbation, and mega cities. We will be dealing with these three terms again and again, ठीक है, in urban settlement, क्योंकि ये repetitive आएंगे and और भी डिटेल में देखेंगे इसके regards. Will be in regular touch with these three terms. Cities, megalopolis, and conurbation.
टॉप 3 गाइस, मेगालोपोलिस, कन्वर्बेशन एंड मेट्रोपोलिस, ठीक है, यू नीड टू राइट दिस. Okay, Rishabh, chalo, good. Now have a few examples with respect to this three. Conurbation and metropolis, okay, metropolis, like चेन्नई, सेम ही तो है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं. चेन्नई. मेट्रोपोलिस में अगर लिखना है तो यू कैन राइट नासिक. मेट्रोपॉलिटन में लिखना है तो नासिक लिखो, वर्ल्ड का एग्जांपल है नहीं हमारे पास. ओके. इंदौर, वडोदरा, ठीक है, ऑलमोस्ट इन द सेम रीजन. नेक्स्ट, कनर्बेशन में लिखना है 3 to 10 मिलियन वाला जो है, तो वहां पर रहेंगे चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद. चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद. एंड मेगा सिटीज, वर्ल्ड एग्जांपल्स, वी आर नॉट हैविंग वर्ल्ड एग्जांपल नाउ. वर्ल्ड एग्जांपल हमारे पास है मेगा सिटीज के और मेगालोपोलिस के. पर पॉपुलेशन कितनी है पता नहीं. शिकागो, अच्छा श्योर, शिकागो की पॉपुलेशन है, हाँ उसकी ना वो ज्यादा पॉपुलेशन होगी. रुक लो, अच्छा मेगा सिटीज लिख तो लो अभी. मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस, मेट्रो सिटीज, मेगा सिटीज, इनकी पॉपुलेशन है. वर्ल्ड एग्जांपल टोक्यो, टोक्यो लार्जेस्ट मेगालोपोलिस है इन द वर्ल्ड, टोक्यो. मैक्सिको सिटी सेकेंड, शंघाई, यस, बीजिंग, 14 मिलियन है, 32 मिलियन है टोक्यो की. कहा ही है, इतनी बड़ी सिटी है तो पता तो रहता है ना नाम. वेट, चलो मैं बताता हूँ. टोक्यो, मैक्सिको सिटी, शंघाई, ठीक है, बीजिंग. नेक्स्ट, इंडियन एग्जांपल्स कौन से इसके? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता. देर आर 44 मेगा सिटीज इन द वर्ल्ड. ये भी एक ऐड कर लेना उसमें. देर आर 44 मेगा सिटीज इन द वर्ल्ड.
अच्छा, चोंगक्विंग है क्या? चोंगक्विंग, हाँ, 32 मिलियन। देखो इसमें लिखा है टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, ढाका एंड साओ पाउलो। कितना है मैक्सिको सिटी? 2022 का फिगर है ये? नहीं यार, मैक्सिको की देखो 21 मिलियन दे रहा है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी इज हैविंग, देखो यहाँ पे देखो, टोक्यो है 37 मिलियन, दिल्ली 29 मिलियन, देन शंघाई 26 मिलियन, मैक्सिको सिटी इज हैविंग 21 मिलियन। हाँ, यस। ढाका, मुंबई, बीजिंग, लाओस कहाँ पे, कौन सा? ढाका मेगा सिटीज में। वैसे कन्वर्सेशन देखो, देखो अब डिफरेंस बताता हूँ मैं तुमको क्या होता क्या है। अच्छा, अभी टाइम हमारा डन है, चलो ठीक है गाइस, वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस सेटलमेंट एंड टाइप्स। ठीक है, नाउ विल बी अगेन ट्राइंग टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट्स, ओके, डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस सेटलमेंट्स टाइप, because you will be going through these terms again and again, right, in the newspaper as well as in say our geography study also. So we will be doing it tomorrow. By the time, see, before that, 2-minute activity. Yes, close your eyes and do recall all those stuff. Not my face, ये जो भी कुछ डिस्कस किया हमने वो वाला. Do close and recall whatever you are just able to recall it as of now. हो गया पूरा? 2 मिनट नहीं हुए ना बट, चलो ठीक ठीक. तो कन्वर्सेशन और इसमें डिफरेंस क्या होता है? कन्वर्सेशन इट इज व्हाट, देखो कन्वर्सेशन मतलब है लास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड है कि जहां पर ना बाउंड्रीज ब्लर हो गई है, उसकी पॉपुलेशन यूजुअली इस रेंज में. और मेगा सिटीज मतलब क्या है कि जिसमें अब तो बहुत सारे सिटीज मर्ज हो गए, और उसकी सोचो ना, जहाँ पे 3 करोड़ पॉपुलेशन होगी वो कितना बड़ा होगा सिटी. टोक्यो 4 करोड़ पॉपुलेशन होगी ऑलमोस्ट. अब जो कन्वर्सेशन में पॉपुलेशन देखो कितनी है, 1 करोड़ से भी कम, 3 to 10 मिलियन है ना. सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड इट एक्सपैंड इज ऑल्सो लेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाट यू वर आस्किंग फॉर मैक्सिको सिटी, या कौन सा और पूछ रहे थे ना, मैक्स Dhaka. Now Dhaka is what having one of, Dhaka is the region of one of the highest population density in the world as well. So it is having population of 2.5 crore almost, या 2 करोड़ प्लस है. तो इतनी पॉपुलेशन में यू विल फाइंड इट इज मोर ऑफ ए मेगा सिटीज देन अलोन कन्वर्सेशन. हाँ, बट ढाका अलॉन्ग विथ अदर इंटरकनेक्टेड रीजन, अब ये बन गया एक लार्ज कन्वर्सेशन रीजन. दिल्ली इज इटसेल्फ आइडेंटिफाइड एज ए कन्वर्सेशन. तो कन्वर्सेशन का तो मीनिंग यही होता है ना, दिल्ली विल बी द लार्जेस्ट कन्वर्सेशन इन द वर्ल्ड बाय 2050. चलो डन गाइस. बंकर लंग, प्रशांत, ऋषभ, यस, ओके, चलो थैंक यू. एंड आई सपोज यू आर ऑल very much clear with this concept. ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो, you can have a YouTube video on it, and even after it persists, do ask me tomorrow. Okay, so we'll be discussing those points again, no issues, because you are supposed to have a clear understanding about all those settlement types. ठीक है, so चलो ठीक है, this is all about from my side. Thank you for your active and alert participation.
and we will be meeting tomorrow. Thank you and have a good day. Yes, yes, please have a good day and take care.